Okay, students, in this lecture we will discuss about the exercise of the second chapter of the geography, the globe, latitudes and longitudes. So the questions are here. Come on the firstly exercise in page number 25. So open your textbook of the NCERT in page number 25 of the geography. ज्योग्राफी की बुक निकालनी है आपने पेज नंबर 25 पर. वहाँ पर एक्सरसाइज आप देखेंगे. वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. आप डिस्कस करके आप आंसर सेल पे लिखने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. क्वेश्चन नंबर 1 एंड द ए पार्ट ए. व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. सो वी हैव डिस्कस्ड GEIOT. GEIOT, geode. The true shape of the earth is geode. Geode means it is like the earth. GEOID, geode. Geode means like the earth. So what will be your answer? The answer will be the true shape of the earth is geode. GEOID, GEOID, geode. So this is the right answer. What is a globe? This is a big question. What is a globe? Globe is a model of the earth. So your answer will be one line, in a single line answer. Globe is a model of the earth. Anywhere it is written the globe is the three-dimensional representation of the earth. Globe is the three-dimensional representation of the earth. So the next question is C. Question number C. What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? Latitudinal value of the Tropic of Cancer. The latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23.5 degree north. Tropic of Cancer north में, Tropic of Capricorn south में. Okay, so right answer is the 23.5 degree north. What are the three heat zones of the earth? What are the three heat zones of the earth? The three heat zones of the earth are torrid zone, temperate zone and frigid zone, as we have discussed yesterday by drawing the globe. मैंने आपको ग्लोब बना करके दिखाया था कल बोर्ड पर. तो वही उसी में से आप उसके आधार पर आपने आंसर लिखने हैं. सो नंबर 1 टॉरिड जोन, TORRID. टेम्परेट जोन. नंबर 3 फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन. FRIGID, फ्रिजिड जोन. Okay. Next is the what are the parallels of the latitude and meridians of the longitude? What are the parallels of the latitude? So parallels of the latitude always moves parallel to the equator. All the parallels of the latitude, all the latitudes or the parallel lines which move parallel to the equator known as the parallels of the latitude. And meridians of the longitude, all the meridians which go through the north to south poles, known as the parallels of the longitude. So parallels of latitude क्या हैं? जो इक्वेटर के पैरेलल जाते हैं. पैरेलल लैटिट्यूड हमने ये बताए थे ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से. एंड जो लॉन्गिट्यूड से क्या है? वर्टिकल लाइन से हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल्स. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो हैं which means north to south poles, known as the meridians of the longitudes. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? So because the torrid zone receives the maximum amount of heat from the sun.
Okay, the sun remain on this area for the maximum times, for the maximum hours. That's why this zone receives a maximum amount of heat. This is the central location of the globe, and it receives sunlight for the maximum time. That's why this is the this area receives a maximum amount of heat. So what will you write on your answer? Torrid zone. So you will write the torrid zone receives the sunlight for the maximum time. The torrid zone receives sunlight for the maximum times, and the torrid zone located in the central part of the globe. The torrid zone located in the central part of the globe. It is the most, or you can say hottest zone of the world. It is the hottest zone of the world. That's why it receives a maximum amount of heat. Next question, question G. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? We have discussed it with the help of the GMT and IST, with the help of globe and the help of the map. So GMT is located in 0 degree longitude, and India is located in the 82.5 degree east. It is the IST. So the difference between these two lines, longitudinal lines, is 5 hours and 30 minutes. And whenever the 1 hour belong to the 15 degree according to its time. So whenever we will go 15 degree at the right side, it will be the 1 hour time difference, as well as whenever we will go 75 degree, then the time difference will be the 5 hours, and whenever we will go 82.5 degree, then the time lag between IST and GMT is the 5 hours and 30 minutes. That's why we see this is the noon in the London and evening in the India. So next question, question number 2. So question number 2, take the correct answer. Take the correct answers. So here A, the value of the prime meridian is, the value of the prime meridian is 0 degree, and the exact is the 0 degree longitude. यहाँ पर longitude लिखा रहता तो भी सही था. 0 degree latitude, 0 degree longitude. So prime meridian क्या है? 0 degree longitude है. Next B, the frigid zone lies near. frigid zone कहाँ पर होगा? Near the poles. कहाँ होगा? Near the poles. फर्स्ट ऑप्शन सही है. क्वेश्चन सी, द टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर, नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर 360. लॉन्गिट्यूड से कितने हैं? 360 हैं. लैटिट्यूड कितने हैं? 180. ओके, सो देयर द राइट आंसर ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज 360. क्वेश्चन नंबर डी, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, it is in southern hemisphere. In the southern hemisphere, Antarctic circle located in the southern hemisphere. Question number E, grid is a network of, grid is a network of parallels of latitude and meridians of the longitude known as the grid. फर्स्ट ऑप्शन इज सही. कल हमने डिस्कस किया था ग्रिड, द इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर नोन एज द ग्रिड. यही कहा था हमने कल. ग्रिड बना के आपको दिखाया था एक जगह ना, वहाँ देखना फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके, तो ग्रिड वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा. बैडमिंटन खेलने जाते हैं उसमें भी क्या होता है, उसके जो रैकेट होते हैं उसमें हमारे ग्रिड बने रहते हैं. आप देखेंगे उठा करके तो आराम से देख सकते हैं द ग्रिड. ओके,
और ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड से, ये वाला आंसर सही है. सो इन द नेक्स्ट पेज देखिए हम नहीं उसमें, यस, फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन ए 3 का ए. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है? 23.5 डिग्री साउथ. द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज ऑफ इंडिया इज. बी ऑप्शन है, सॉरी बी क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट. स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट. द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज. 0 डिग्री मेरिडियन को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. इट इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मीन टाइम, GMT. तो यहाँ प्राइम मेरिडियन है. डी. द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स. सो यहाँ पर क्या आएगा? पोल्स, POLES. जो लॉन्गिट्यूड्स है वो अपनी डिस्टेंस कहाँ डिक्रीज करते रहते हैं? पोल्स के आसपास. द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर. आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न, NORTHERN, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. So here is the draw a diagram of a globe showing the Earth's axis, the equator, tropic of Cancer and Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. आप क्या करेंगे? जो हम डायग्राम बना के दिखा था आपको बोर्ड पर, आप वाला डायग्राम बनाएंगे. उसमें सब क्या बनाएंगे? 3 हीट जोन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज एक एक्टिविटी आप करेंगे, तो इसमें दी गई है कार्डबोर्ड की हेल्प से. इसमें आप बनाने की सोचेंगे ऐसे ही जैसे आपको नीचे दिखाई गई हैं नए स्ट्रक्चर टाइप के. ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपको इसमें डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं. एक तो अभी वाला डायग्राम बनाएंगे, आपको इसमें दिया है ना, द डायग्राम बिलोंग टू द टाइम लॉग से. टाइम लैग के जो टाइम लैग वाला है, अभी वाला डायग्राम बना के दिखाएंगे. लिखा है टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है ना. हाँ, तो ये डायग्राम आप बना के दिखाएंगे. और इंडिया का तो अपने आप रहेगा. अब उसको टाइम बना के दिखाना. और टाइम लैग वाला हो गया. और उससे आप दिखाएंगे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला बना के दिखाएंगे. ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से. आप इसमें से क्या दिखाएंगे? एक इसको बना के दिखाएंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है रिजिड जोन वाले. और आप क्या दिखाएंगे? ये वाले भी बना के दिखाएंगे जिसमें आपको लैटिट्यूड दिखाए गए हैं. अच्छा, और हैं कुछ बनाने लायक? ग्लोब अपने आप रहेगा, नहीं बनाना ग्लोब. सो कितने हो गए? उन्हें द हीट जोन से. नंबर 2 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है. नंबर 3 द टाइम जोन्स वाला मैप. ओके, इट्स sufficient for today, and we have also discussed the exercise and chapters, and if you have any queries you can ask it. So next time we will discuss about the of the next chapter. Okay.